Start. It was further held that the primary bank at Bhatinda, although not a branch office of the bank but is the constituent nonetheless stop. It is further observed by the division bench that while determining which government is the appropriate government, it is to be seen as to where the dispute substantially arose. Stop. Reference is made in this case to a decision of the another division bench of this court in the case of Messrs. Little Sons and Company's case Supra. Stop. It was emphasized that the reference would be made by the government within whose territory the industrial dispute arises. Stop. In view of the above, it is stated that it is not necessary that the head office or the controlling office of the industry should be present in that area. Stop. But all important part of the ratio is in the last sentence where it is stated that all that is required is that a part of the industry should exist there. Stop. This judgment can therefore be of no assistance to the respondent workman for the submission that merely because the order of dismissal has been received in Chandigarh, the industrial dispute substantially arose within the territorial jurisdiction of the Union Territory Chandigarh. Stop. It is the admitted position on facts that respondent workman has never been employed by the petitioner in any establishment within Chandigarh. Stop. The respondent workman was last employed at Bombay. Stop. She has been transferred from Srinagar to Bombay. Stop. Substantially, the cause of action has arisen at Bombay. Stop. Merely because the order of dismissal has been served at Chandigarh would not be sufficient to hold that the industrial dispute has substantially arisen within the Union Territory Chandigarh. Stop. Mr. Rana has strongly relied on the observations made by the Supreme Court in the case of State of Punjab versus Amar Singh Hararika. Stop. In that case, a constitution bench of the Supreme Court considered the impact of an order of dismissal purported to have been passed on 3rd June 1949 and communicated to the respondent Amar Singh Hararika by the Chief Secretary PAPSU government on the 2nd 3rd January 1953. Stop. After considering the entire matter in depth. Stop. Gajendra Gadkar, CJ speaking for the court observed as follows. Stop. The first question which has been raised before us by Mr. Basin Narayan is that though the respondent came to know about the order of his dismissal for the first time on the 28th May 1951, the said order must be deemed to have taken effect as from the 3rd June 1949 when it was actually passed. Stop. The High Court has rejected this contention, but Mr. Basin Narayan contends that the view taken by the High Court is erroneous in law. Stop. We are not impressed by Mr. Bhasin Narayan's argument. Stop. It is plain that the mere passing of an order of dismissal would not be effective unless it is published
and communicated to the officer concerned. Stop. If the appointing authority pass an order of dismissal but does not communicate it to the office concerned, theoretically, it is possible that, unlike in the case of a judicial order pronounced in court, the authority may change its mind and decide to modify its order. Stop. हाय स्टूडेंट, डिक्टेशन लिखने के बाद उसको टाइप करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताते हैं। जैसे आप इसमें डिक्टेशन लिख लेते हैं तो इस विंडो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इस टाइप से विंडो नजर आएगी। इसमें विंडो के राइट साइड पे स्किप टू ट्रांसक्राइब वाली ऑप्शंस आपको नजर आ रही है, इस पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको लॉगिन वाला विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें लॉगिन नहीं करना है, साइन अप करना है। साइन अप पे जैसे क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट आ जाएगा। क्रिएट अकाउंट में आपने फुल नेम, ईमेल, ईमेल आप अपनी सही ईमेल डालिए, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद क्रिएट अकाउंट कर दीजिए। उसके बाद आपकी ईमेल पर वेरीफाई योर ईमेल उसका लिंक ओपन हो जाएगा। इस पे आप जाके क्लिक करें। क्लिक करते ही तो कंटिन्यू की ऑप्शन आ जाएगी। कंटिन्यू पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद लॉग इन वाली ऑप्शन आती है, इस पे साइन इन करना है आपको। साइन इन करने के बाद ट्रांसक्राइब हियर वाला विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे टाइमर है, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप टाइम से पहले टाइप कर लेते हैं तो नीचे ऑप्शन है सबमिट अटेम्प्ट, उस पर क्लिक करो, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको सबसे पहले एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कितनी एक्यूरेसी से आपने टाइप किया। नेक्स्ट विंडो है फुल मिस्टेक, कितनी मिस्टेक आपने की, हाफ मिस्टेक्स कितनी है, और एरर टोटल कितने हैं और कितने वर्ड आपने टाइप किए। और नीचे आपको ग्रीन में दिखा रहा है, ग्रीन ये जो करेक्ट वर्ड है, रेड वाला जो है आपकी मिस्टेक है। इसके बाद नीचे एरर ब्रेकडाउन वाली ऑप्शंस आती है, इसमें आपको सारा डिक्टेशन के बारे में बता रहा है। ओमिट वर्ड्स, मिसिंग वर्ड्स, एडिट वर्ड्स, सब्स्टिट्यूट वर्ड, ये सब दिखाता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस है व्यू लीडर बोर्ड की। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको डिक्टेशंस योर परफॉर्मेंस की ऑप्शन दिखाता है, आपका कितना रैंक है और एक्यूरेसी कितनी है। ये जितने भी बच्चों ने इसको टाइप किया वो उनमें आपका रैंक डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद हमारे पास व्यू ट्रांसक्रिप्ट पीडीएफ की ऑप्शंस है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको विद शॉर्ट एंड मैटर जो डिक्टेशन का मैटर है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी आपने डिक्टेशन है इसमें अटेम्प्ट की हैं उसका विद ग्राफ आपको डिस्प्ले करेगा। थैंक यू।